हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टी देखी और एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा। आज हम रेशनल नंबर्स में आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास पहला नंबर है 7/4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉजिटिव है, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 4। 0 is divided by 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 and 10/4. But our question is 7/4. So on this number line, 7/4 is plotted here. And we give the name A. So A 7/4 यहाँ मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5/7। दिस रेशनल नंबर इज माइनस, सो on this number line we have to start from right. यहाँ फर्स्ट 0, 1 माइनस में, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब क्या करेंगे, 0 इज डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 0/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6 and -7/6. -5/6, we get this number here. So -5/6 is mentioned here. Let's give this name B. Third one is 4/9. This rational number is positive rational number, so we have to start the online number from left hand side. This is our 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. All number is divided by 9. Therefore 0/9, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 and so on. But लेकिन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन है 4/9 को लाइन नंबर पर कहाँ रखना। तो 4/9 यहाँ पर मिलेगा। सो दिस इज आवर आंसर एंड वी कॉल दिस पॉइंट C. तो इसी तरह क्वेश्चन 1 यहाँ कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. रिप्रेजेंट द नंबर -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो क्या करेंगे हम, यहाँ सब माइनस में है, तो 0 यहाँ 0 लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। हमें चाहिए -2/11, -5/11, -9/11, यानी कि सबके 11 से भागा करेंगे तो -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11.
सबसे पहले -2 upon 11, -2 upon 11 is this point. Suppose this is 1 A, and then -5 upon 11, तो ये है हमारा 5 upon 11 जिसे हम B कहते हैं, and then -9 upon 11, we can find this point here, and this is suppose C. So हमें ये प्राप्त हो गया कि नंबर लाइन पर A तीनों तीन पॉइंट्स एक ही नंबर लाइन पर कहाँ कहाँ मिलते हैं। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। 2 is also called 2 upon 1 is equal to 2 into 10, 1 into 10. That is why 20 upon 10. So which rational numbers are less than 20 upon 10? तो -19 upon 10, -18 upon 10, 15 upon 10, 14 upon 10, 16 upon 10 एंड सो ऑन। हम बहुत सारे रेशनल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 20 से जो स्मॉल है यानी कि 19 upon 10 भी आ सकता है, 17 upon 10 भी आ सकता है, 18 upon 10 भी आ सकते हैं। तो दिस आर द रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर। Our question number 4 is find rational numbers between -2 upon 5 and 1 upon 2। यानी कि हमारे पास -2 upon 5 and 1 upon 2 है। First of all, we find out the LCM of 5 and 2। LCM is equal to 5 into 2 यानी कि 10। So -2 upon 5 is also called 2 into 2 is equal to -4 upon 10, and 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 into 5 into 5 is equal to 5 upon 10. Difference between -4 and 5, 5 minus -4 is equal to 9. But we have to find 10 numbers between these two numbers. So the difference is 9. So we have to expand this difference. -4 now again multiply by 2 upon 2. So -4 2 is 8 into 20, and here 5 upon 10 multiply by 2 upon 2 is equal to 10 upon 20. Now -8 और 10 के बीच हम 10 रेशनल नंबर ले सकते हैं। -7 upon 20, -6 upon 20, -5 upon 20, -4 upon 20, -3 upon 20, -2 upon 20, -1 upon 20, 0, 1 upon 20, 2 upon 20, and so on. We have to find out 10 rational numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. These are the rational number between -2 upon 5 and 1 upon. Now question number 5. In this question we have to find 5 rational numbers between 2 upon 3 and 4 upon 5. The LCM of 3 and 5, LCM, is equal to 15. Now first rational number is 2 upon 3. Multiply by 5 is equal to 2
5s are 10 and 3 5s are 15. For 4 and 5, 4 upon 5 multiply by 3 into 3 is equal to 12 upon 15. Now the difference between 10 and 12 is 2, but we have to find out 5 rational numbers, so this difference is not sufficient. Once again, 10 upon 15 is multiplied by 2 upon 2 is equal to 20 upon 30, and 12 upon 15 multiplied by 2 upon 2 is equal to 24 upon 30. Now difference between 24 and 20 is 4, but our question is to find out 5 rational numbers. That is why once again we have to find 20 upon 30 multiplied by 2 upon 2, it is 40 upon 60, and here 24 upon 30 into 2 upon 2 is equal to 48 upon 60. The difference between 48 and 40 is 8. So we find the rational number between 2 upon 3 and 4 upon 5 is 41 upon 60, 42 upon 60, 43 upon 60, 44 upon 60, and 45 upon 60. This is our answer. Same the way, next is we have to find 5 rational numbers between minus 3 upon 2 and 5 upon 3. LCM is 6. Now minus 3 upon 2 multiply by 3 is equal to minus 9 upon 6, and 5 upon 3 multiply by 2 and 2, 10 upon 6. Difference between minus 9 and 10 is 19. So this is sufficient for us. So the rational numbers between minus 3 upon 2 and 5 upon 3 are minus 8 upon 6, minus 7 upon 6, minus 5 upon 6, 7 upon 6, 8 upon 6. This is the answer. You can take other numbers also, because we can find minus 3 upon 2 and 5 upon 3 lot of numbers between these two numbers. Now question number 7. Find 10 rational numbers between 3 upon 5 and 3 upon 4. 3 upon 5 and 3 upon 4. LCM is equal to 20. So 3 upon 5 is equal to 3 upon 5 multiplied by 4 is equal to 12 upon 20. In this side, 3 upon 4 is equal to 3 upon 4 multiplied by 5. This is 15 and this is 20. Difference between 12 and 15 is 3. And our question says that we have to find out 10 rational numbers between these two rational numbers. So this difference is not sufficient. Once again we have to multiply this 12 upon 20 into 4 into 4.
So 12 4 जा 48 and 24 जा 80. Here 15 upon 20 multiply by 4. This is 60 and 80. The difference between 60 and 18 is more than 10. So we can find the answer 49 upon 80, 50 upon 80, 51 upon 80, 52 upon 80, 53 upon 80, 54 upon 80, 55 upon 80, 56 upon 80, 57 upon 80, 58 upon 80, 59 upon 80. These are the rational numbers between 3 upon 5 and 3 upon 4. So this chapter is complete here. मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर कुछ आपका प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस. एंड आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें. थैंक यू.